Good evening, everyone. See, in the previous session, we started with lean system, which was implemented for elimination of wastages of all kinds, right? Now, we were talking about the next part, performance measurement. Total production management is something that we studied in the last session, which was the last thing that we covered. Now, total productive maintenance is a part of total quality management where you are focusing on production related activities. Correct? So, TPM, total productive maintenance, if you want to evaluate that, how would you evaluate that? That part we'll see now. Can you hear me clearly? Yeah. Okay. Thank you, Varun. The first important basis of measurement is overall equipment effectiveness. What is it? Overall equipment effectiveness. See, this concept, OEE, overall equipment effectiveness, focuses on three different areas, three different segments, which make a system a strong system. First one is how much is the available time. Once I know how much is the time available, I can check the efficiency or the performance of the team. And at the same time, even the quality can be assured. Like for example, if I have a shift of 10 hours per day, out of 10 hours per day, if 1 hour is taken for granted for lunch, changeover, and other activities, out of 10 hours in a day, 1 hour will be used for lunch, changeover, clothes changing, and all that, and other needs, basic needs, biological breaks. That means I already know that out of 10 hours, for 1 hour, my team is not going to work. So this is my planned downtime. This is my planned downtime. Planned downtime means something that I already know right from the beginning. So 9 hours are available. Now, if out of 9 hours, if I'm utilizing less or if I'm utilizing more, that will have some impact on the productivity. If out of 9 hours, if I utilize only 7, or out of 9 hours, if I utilize only 6, out of 9 hours, if I utilize, instead of 9 hours, I utilize 10, this will have definitely some impact on productivity. Then I need to check one more thing. If 9 hours was the available time, if 9 hours is the actual time taken, in 9 hours, how much is the work completed? If I complete 8 hours work in 9 hours, my team is inefficient. If I complete 10 hours work in 9 hours, my team is efficient. So efficiency evaluation is also done. Now, when you talk about efficiency, we see to it that whatever time is taken by the team must produce acceptable output. Now, acceptable output means output having no defect. If output is having some defect, it will be returned by the customer, it will be rejected by the inspection team, and that cannot be called as a quality output. So available time utilization is availability.
Utilization that period effectively is efficiency. Utilizing that period effectively is efficiency. And not only producing the output, but producing good quality output is one more requirement of total quality management. So basically, three things are required to be understood. One is availability, second one is performance, which we call it as efficiency, and the third one is quality. According to standard norms, minimum criteria is 50% and maximum is 85%. Generally, this is a range which is set internationally. Okay, so 50% has to be there. 50% has to be there. And if not, I mean, if it is more than 50, it can reach 85%. We'll start with the illustration. I'll explain you everything in the illustration. Illustration number 2. Kiwi Limited manufactures spare parts and can be called as high volume based manufacturing environment. The company is using the system of TPM, total productive maintenance, for maintaining and improving the integrity of manufacturing process. There are several different automated manufacturing machines located in the plant, through which manufacturing of spare parts are done and supplied to cater the demand in the market. A 12-hour shift is scheduled. One shift is of 12 hours to produce spare parts in Kiwi Limited, as shown in the schedule below. The shift has 15 minutes break. That means 45 minutes the team is not going to work. You know that right from the beginning. And 10 minutes cleanup period. So guys, out of 12 hours in a shift, you guys already know that the team is not going to work for 15 into 3, 45 plus 10, 55 hours. So your planned downtime is 55, not hours, 55 minutes. Your downtime is planned downtime, expected downtime, anticipated downtime, known downtime is 55 minutes. Production schedule is also given. Cycle is 10 seconds. 10 seconds. Production cycle means production time. So you take 10 seconds to produce 1 unit. You have produced 3360 units. 75 units were generated of scrap. So that is unacceptable output. Unplanned downtime is 36 minutes. Calculate OEE and comment on it. Okay. Do not write anything unless I tell you to copy. Basically, your OEE, overall equipment effectiveness, is based on availability, productivity, rather performance, or you can also call it as efficiency, and effectiveness. That means the quality. Let's go for available time. Available time. You have a shift of 12 hours, but your planned downtime is given in terms of minutes. So let me take everything in minutes. 12 hours into 60 minutes. 12 hours into 60 minutes. 720 minutes you have. 720 minutes are split. 720 minutes are split into 2 parts.
planned downtime and unplanned downtime. And the remaining part must be your time taken. The remaining part must be your actual time taken. Okay, so according to the question, 15 minutes into 3, 45 plus 10. That means 55 minutes you're not going to work. 55 minutes you're not going to work. You know that right from the beginning. There was additional loss which was not known to us. That is 36 minutes. So 720 minus 55 minus 36. 629 hours. How do you know? It is just a balancing figure, is the actual time taken. Have you understood this? Copy this. You can write it as total available time. Please write it as total available time. 12 hours into 60 minutes, 720. $720 minus 55 minus 36 gives you 629 minutes. Yeah. Is it done? I hope this is clear. So guys, your net available time will be 720 minus 55, 665 minutes. Your team has actually worked for 629 minutes. So, availability ratio will be, out of 665, you have utilized only 629. 94.59. 94.59 is my availability ratio. This indicates that I have wasted some time, which is a concern for me. This 36 is a concern for me. I should find out reasons for this. This is unavoidable. This is accepted. So ideally, out of 720 minutes, the team could have easily worked for 665 hours. But because of extra downtime, which was not expected, the team has actually worked for 629 minutes. So availability ratio indicates that to what extent you have
made the infrastructure useful. 94.59 is the available ratio. So that's the wastage that you're talking about. Balancing figure 5.41% is not utilized. The time was not utilized. Have you copied this? Available time, actual time. Available time, actual time. Now, my next concern is, okay, चल भाई 629 hours काम किया, लेकिन 629 hours में भी ढंग का काम किया क्या तूने? And that is my performance evaluation, efficiency evaluation. Now, if I want to talk about performance evaluation or efficiency evaluation, performance or efficiency evaluation, performance or efficiency evaluation. Now, if I'm talking about this, you already know, guys, efficiency is analyzed on two bases. Either it can be done on the basis of number of hours, or it can be done on the basis of number of units. So if you're considering number of hours as a base, it is standard hours upon actual hours into 100. And if you're considering output as a base, then it is actual quantity upon standard quantity into 100. Now, currently we have number of hours information, so I'm focusing on number of hours. My team has produced 3360 units. My team has produced 3360 units. 1 unit requires 10 seconds. So standard hours or other standard time. Three 360 units the team has produced into 10 seconds. 1 minute consists of 60 seconds. So 3360 units should have got completed in 560 hours, 560 minutes. Are you understanding this? So it is your total production or rather I would say it is your standard time for total production. I don't care whether the quality was maintained or not. That part I will evaluate in the third category where I'm going to evaluate quality. Here I'm simply talking about production. The segment is different and the department is different. Here I'm completely focused on efficiency. So my performance ratio will be, so the performance ratio will be, I should have completed work in 560 minutes. I actually completed work in 529 minutes. No, it's not 529, it is 629. Yeah, I got completed work in 629 minutes. So 560 minutes the team should have taken, 629 minutes the team has taken. So the team is 89.03% efficient. Copy this. This is your second evaluation. First, you calculated how much is the time utilized. So you come to know how much is the idle capacity. You can take care of that. You can find out
reasons for that. You can take action on that. You can do something whereby that idle capacity is utilized, and in the next production run, your time will not be wasted. Second evaluation was performance. 3360 units were produced. Ideally, 3360 units should have got produced in 560 minutes, but my team has actually produced them in 629 minutes. So 89.03 is my efficiency ratio. Any doubt so far? Now, just because you have produced 3360 unit, that doesn't mean you have done a great job. We have to evaluate quality structure as well. So quality is the third important aspect which we need to consider. 10 second कैसे आया? ऐसे. Sarangi, Bada, is this clear? Okay. Next. So that was quality. Quality के लिए simple calculation है. You produce 3360. And out of 3360, 75 units were scrapped. 75 units were scrapped. अगर 3360 में से 75 units were scrapped, that means balance quantity must have been accepted. So 3360 minus 75, 3285 upon 3360. So that comes to 97.77. This shows that whenever you produce 100 units, 3% are lost. All three will give you complete evaluation. All three will give you complete evaluation. So OEE is equal to 94.59 into 89.03 into 97.77 of course percent. So 94.59 indicates that it is underutilization. 89.03 indicates that there is some inefficiency. And 97.77 says there was some quality lapse. And the total is 94.59 into 89.03%. To 97.77. So you can always take this as into decimals also, if you don't want to calculate like this. See, the simple calculation is this way. 0.9459, 0.8903, 0.977,
9459. So that comes to 0.8234. That is 82.34%, which is close to 85, which is considered to be a better performance. See, always remember one thing. No matter how much you say, sometimes this is unavoidable. Actually, minimum the better. Just focus on it. Focus on one thing, that it should not be maximized. Okay. 100% efficiency इस दुनिया में किसी की नहीं होती. We all are humans. Okay, we are not robots. So there will be some time loss. And it is not necessarily, it's not necessary that every time it will be due to the inefficiency of workers or worker ही काम नहीं कर रहा है. ऐसा नहीं है. There are infrastructure issues. There material quality also makes a difference. Inferior quality material needs more processing, more time will be taken. Power failure हो सकता है, power fluctuation हो सकता है. Sometimes machines are not serviced properly. They will take more time to get, to process the material. Basically, it is about how effectively you have utilized the available time. पहले तो 665 में से तुम लोग ने 629 यूज किए मिनट्स. चल 629 में भी तुम लोगों ने सिर्फ 560 मिनट का काम किया, और 560 मिनट का काम 629 में करने के बाद भी हर 100 रुपए पे, हर 100 यूनिट्स पे 3 यूनिट तुम लोग का वैसे ही लॉस निकलता है. रिजेक्शन. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज इंडिकेटिंग. Trust me, this is much better percentage. I told you it should be within a range of 50 to 85. Is that clear? So kindly copy this. Can you repeat standard time calculation? अरे कौन सा स्टैंडर्ड टाइम? ये वाला. देखो, आपने 3360 यूनिट्स बना लिए. आपको क्वेश्चन में बोला है 1 यूनिट बनाने के लिए 10 सेकेंड्स लगने चाहिए. तो आपने 3360 यूनिट्स बनाने के लिए आपको टोटल 560 मिनट्स लगने चाहिए थे. दैट इज योर स्टैंडर्ड टाइम, द टाइम विच शुड हैव बीन टेकन टू कंप्लीट द प्रोडक्शन. The time that should have been taken to complete the production. Priya, is this clear? हाँ, सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना था ना, इसलिए वो 60 से डिवाइड किया मैंने. 3360 इंटू 10, 33,600 सेकेंड्स मिलता ना. 60 सेकेंड स्टैंडर्ड नहीं है प्रिया अदिति, 10 सेकेंड स्टैंडर्ड है. क्या करती है? लेट ज्वाइन किया. साइकिल इज 10 सेकेंड्स. 1 यूनिट बनाने के लिए 10 सेकेंड्स लगने चाहिए. प्रिया, इज दिस क्लियर? y divided by 60. प्रिया, आपको आंसर मिनट्स में चाहिए, सेकेंड्स में चाहिए? और 3360 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड्स करने के बाद 33,600 सेकेंड्स मिलेगा या मिनट्स मिलेगा? तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. कॉपी कर लो फटाक से. चलो. So, what is the conclusion?
इसका कंक्लूजन क्या है? It is close to 85%. World class performance level. Company should take measures to improve it and strive to attain 85% level. Availability ratio is this. Performance and quality ratio need attention as they are below the standard. Standard is also set here. Generally, it is said 90% of the time should be utilized, 90% and above. Performance efficiency ratio should be more than 95%. It should be more than 95%. More than 90% should be availability. More than 95% should be the efficiency and more than 99% should be the quality. That means standard norm से भी हम लोग नीचे है when it comes to efficiency and quality. So आपको एक ही चीज पे कमेंट करना है. Overall is 83, less than 83, less than 85%. Overall is less than 85%. And that is mainly because we need to focus more on performance, efficiency, and quality. It is highly miserable. 89% it is not acceptable. And quality ratio is also 97%. तो 3% तो वैसे भी लॉस हो रहा है तुम लोग का हर केस में, उतना नहीं होना चाहिए. So availability should be more than 90% जो है, and availability is more than 90% जो 94% है. Efficiency is less than 95%. That is a problem. Quality में भी problem है. बस तो फिर ये नोट लिख देने का आपको. Yes guys, is this clear? इसका एक पॉइंट मैं रिजर्व करके रख रहा हूं जो मैं बाद में किसी और क्वेश्चन में कवर करूंगा. सब कुछ एक साथ हजम नहीं होगा. देखो, अवेलेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग टाइम माइनस प्लांट प्रोडक्शन टाइम. प्लांट प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? टोटल माइनस एक्सपेक्टेड डाउन टाइम. टोटल माइनस एक्सपेक्टेड डाउन टाइम. ऑपरेटिंग टाइम कैसे मिलेगा? प्लांट माइनस अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम. You can write it with a pencil. Operating time means, plant time means total time minus expected downtime. And operating time means plant time minus unexpected downtime. Performance evaluation, it's very simple. Get your total quantity. Total count means total quantity. Please don't be bothered about wastage and all that, because wastage will be evaluated in the third part, quality concern, not in the second part. Here it is completely based on production. So total count multiplied by standard hours, standard time. And that will be divided by operation time. That will be divided by operation time. ये समझा? तुम लोग इतना आवर्स ही काम कर सकते थे. इतने आवर्स में तुम लोगों ने इतने आवर्स का काम कर दिया है. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस. समझा? एंड देन this is actual total actual quantity minus accepted quantity. Sorry, accepted quantity minus total actual quantity. That will give you quality ratio. समझा क्या बोला मैंने? Don't write anything, हाँ बाबू. Please do not write anything. What is OEE? Overall equipment evaluation. Availability multiplied by performance multiplied by quality. बराबर?
तो अवेलेबिलिटी मीन्स टोटल टाइम माइनस एक्सपेक्टेड लॉस डाउन टाइम, बराबर ना? एंड दिस इज टोटल टाइम माइनस टोटल लॉस। ले सकता हूँ कि नहीं? मतलब इन शॉर्ट ये तो एक्चुअल आवर्स हुआ। दिस इज एक्चुअल टाइम। अच्छा, हाउ वुड यू गो फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड टाइम फॉर total actual quantity. So standard time per unit into total actual quantity divided by actual time. Actual time मतलब total time minus total loss. बोलो, समझ रहा है ये फॉर्मूला? अरे समझ रहा है कि नहीं? हाँ खुशी, ध्यान दो यहाँ पे। अवेलेबिलिटी मीन्स आपके पास टोटल 720 मिनट्स थे अवेलेबल, उसमें से 55 माइनस किया तो आपके पास नेट आवर्स आए। उतना काम हो सकता था 665 आवर्स। आपने 665 आवर्स भी काम नहीं किया, आपने 36 आवर्स और काम कम कर दिया है, तो इसका मतलब 665 इज डिनोमिनेटर, टोटल टाइम माइनस एक्सपेक्टेड लॉस was available with you, but you worked even less for lesser time. Total time minus total loss, which includes expected downtime as well as unexpected downtime. बराबर? खुशी अभी समझा? एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड विल गिव यू स्टैंडर्ड टाइम दैट शुड हैव बीन टेकन। इतने आवर्स का काम या इतने मिनट्स का काम आपने सिर्फ इतने मिनट्स में खत्म किया, दैट विल गिव यू एफिशिएंसी रेशियो। नाउ यू अंडरस्टूड? एंड क्वालिटी रेशियो मींस accepted actual quantity divided by total actual quantity. Total loss is total idle time. Yes, expected plus unexpected. समझ में आया फॉर्मूला क्या है? कंबाइंड फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, अगर सब मल्टीप्लिकेशन ही है तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी उड़ जाएगी, तो बचा क्या? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट अपॉन टोटल टाइम माइनस एक्सपेक्टेड लॉस इनटू एक्सेप्टेड एक्चुअल क्वांटिटी। सब कुछ तो उड़ गया मगर ये तीन नहीं उड़ा। You understood the derivation of another formula here. अरे बाबू, yes no no, कुछ तो बोलो। You understood the derivation of another formula. अब इसको करके दिखाता हूं। 10 seconds per unit
अब टोटल टाइम माइनस एक्सपेक्टेड लॉस 665 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेप्टेड क्वांटिटी, वो तो 3360 माइनस 75 होगा, करेक्ट। 3360 माइनस 75 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 665। ये तुम लोग का फॉर्मूला 3360 माइनस 75। देख लो कितना आता है। 3360 माइनस 75 इंटू 10 सेकेंड्स करोगे 32,850 न्यूमरेटर आएगा सेकेंड्स में, उसको डिवाइड बाय 60 करो तो मिनट्स में आएगा। 547.5 मिनट्स डिवाइडेड बाय 665 मिनट्स, परसेंटेज निकालोगे तो यही आएगा। एक आध परसेंट इधर, ना 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 ना, 49.39 कैसे आएगा वरुण? तेरा न्यूमरेटर सेकेंड्स में है मेरे भाई। 3360 माइनस 75, 3285। 3285 यूनिट्स बनाने के लिए 10 सेकेंड के हिसाब से 32,850 सेकेंड्स लगने चाहिए थे, मतलब कितने मिनट्स? डिवाइड बाय 60 कीजिए तो न्यूमरेटर आएगा 547.5 मिनट्स, डिनोमिनेटर आएगा 665 मिनट्स। કેટલા થઈ ગયો બાબा? 82.33। हाँ, एक हाथ दूसरा रुपया इधर उधर हो सकता है, परसेंटेज 0.01 0.02 का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आपको डेरिवेशन समझा फॉर्मूला का? रटने का नहीं कोई भी फॉर्मूला। मैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बिना फॉर्मूला के करवाता हूँ, ये तो चिंदी है। फॉर्मूला जिस दिन तुम लोग ने बाय हार्ट करना शुरू कर दिया उस दिन तुम लोग का कंफ्यूजन शुरू। यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। क्लियर है? वापस एक बार समझा देता हूं। अवेलेबिलिटी नेट आवर्स अपॉन एक्सपेक्टेड प्लान्ड आवर्स, बराबर स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स, और ये एक्सेप्टेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब आवर्स को यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये this is getting cancelled against this and this is getting cancelled against this. सर 10 सेकेंड एंड 665 मिनट्स डिफरेंट यूनिट्स में नहीं आया, समझा नहीं? मेरे समझ में नहीं आया, वापस बोलिए। मैं एक काम करता हूँ, चलना मैं तुम लोग को ना फिगर्स लेके समझा देता हूँ। आजकल फिगर पे पहले ध्यान जाता है, मतलब समझ में आती है। तो लेट्स टॉक अबाउट फिगर्स फर्स्ट। मुझे बताओ, नेट आवर्स थे 665, आपने काम किया 629 में, इसलिए अवेलेबिलिटी रेशियो लेस देन 100 है। यू गाइस अग्री विथ मी? अब 3360 यूनिट्स को 10 सेकेंड्स लगने चाहिए थे, बराबर ना? 3360 को 10 सेकेंड्स लगने चाहिए थे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 10 सेकेंड 10 सेकेंड्स अपॉन 60 सेकेंड्स, तो मिनट्स में आंसर मिलेगा। लेकिन आपके टीम ने काम खत्म किया 629 में,
और फिर आपको पता चलता है कि 3360 यूनिट्स बना तो दिए, पर एक्सेप्टेबल निकले सिर्फ 3285। अरे मेरे भाइयों, 629 कैंसिल होगा, 3360 कैंसिल होगा, तो 3285 यूनिट्स इंटू 10 सेकेंड्स, सेकेंड्स में आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट, और 665 मिनट्स वैसा रहेगा, तो आपका आंसर तो वही आने वाला है। मतलब इट इज स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन एक्चुअल टाइम वर्कड। एक्चुअल टाइम वर्क मींस नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, सारे डाउन टाइम माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा। यस बाबू लोग, हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस पार्ट? You understood the derivation of this formula? The same thing they have mentioned here. Good count is actual total actual quantity into ideal standard time is standard time per unit divided by planned production time. Planned means total minus expected downtime. और हमने गिन के देखा है वो 665 एक्सपेक्टेड डाउन टाइम माइनस कर दिया। अरे इज दैट क्लियर? तो ये शॉर्टकट है टू गेट OEE। समझा? चलिए, now they have given about cellular manufacturing. I have already explained this to you. फटाफट जिस देख लो इसका, movement quickly, wide variety of similar products, making little waste as possible. मैंने आपको समझाया था सेल्यूलर मार्केटिंग में, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में, all your units, all your equipments, all your machines are cluttered together as one system. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, they are cluttered together as one cell. एक बंदा या at the most 2 बंदे मैनेज करेंगे. They can be connected through conveyor belt where output of one equipment will become input of the second one. मतलब ये अगर असेंबलिंग प्रोसेस है तो ये सोल्डरिंग प्रोसेस होगा, ये प्रोबेबली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगा, ये प्रोबेबली पैकिंग प्रोसेस होगा, ये प्रोबेबली सेकेंडरी पैकिंग प्रोसेस होगा, ये प्रोबेबली टैगिंग प्रोसेस होगा, और द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। अब टैगिंग वाला इधर है, ये फिनिशिंग वाला है, तो हो सकता है कि ये किसी दूसरे प्रोसेस का रिक्वायरमेंट हो, 2, 3, उसका चौथा प्रोसेस और इसका 5वां इक्विपमेंट सेम है, तो यू कैन कनेक्ट इट। मैंने आपको प्रिंटर का एग्जांपल दिया था, प्रिंटर आपके ऑफिस के एक कोने में पड़ा रहता है, प्रिंटर आपके ऑफिस के एक कोने में पड़ा रहता है, करेक्ट? अब उसको कमांड कहीं से भी आता होगा, पूरे ऑफिस में से किसी भी डिपार्टमेंट से कमांड आता होगा, इट प्रोसेसेस इट ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस। एक फाइल अगर आपका 12 पेजेस का है, तो जब तक वो फाइल प्रिंट नहीं होती दूसरी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। पहले का पहला पेज, दूसरे का 7वां पेज, तीसरे का 15वां पेज, ऐसा नहीं होगा। जो फाइल उसने, द फाइल दैट प्रिंटर पिक्स अप विल बी प्रिंटेड फर्स्ट। तो हो सकता है कि पहले 12 पेजेस इसके प्रिंट हो, फिर इसके 16 पेजेस प्रिंट हो, फिर मेरा एक पेज निकले, पॉसिबल है। बट कैन आई से दैट इज अ कॉमन इक्विपमेंट यूज्ड बाय ऑल डिफरेंट प्रोसेसेस, मतलब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी यूज कर सकता है,
मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट भी यूज कर सकता है, एडमिन डिपार्टमेंट भी यूज कर सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी यूज कर सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, अकाउंटेंसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी यूज कर सकता है, ऑडिटर्स भी यूज कर सकते हैं। वैसे एक मशीन कॉमन हो सकता है दो तीन सेल के लिए, पर इसमें होता क्या है, सिंस एवरीथिंग इज अरेंज टुगेदर, सबसे पहले तो जगह बचेगी। इधर जाओ उधर जाओ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला करने की जरूरत नहीं है ना। तो मेरा सबसे पहले मूवमेंट बच गया, ना मुझे माल मूव करना पड़ रहा है, ना मुझे वर्कर को मूव करना पड़ रहा है। तो मूविंग टाइम जो एक विच इज वन ऑफ द वेस्टेजेस इज अवॉइडेड, क्योंकि सारा मशीन आजू बाजू में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अरे भजिया तलते हो ना, भजिया तलता है ना रेकड़ी पे, उसका भी देखो बेसन एक जगह पे होता है, उधर से ही कढ़ाई में डालेगा, एक जगह पे बेसन में डाल के घूम के आए के हाथ नहीं डालता वो। थिंग्स आर केप्ट क्लोजर, isn't it logical? Same thing is done in cellular manufacturing. All units are clubbed together as one cell and the production starts. मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग इक्विपमेंट रखने से अच्छा एक ही एरिया में इक्विपमेंट आएंगे तो सेटअप इज डन, तो आपका वो सेरी सिकेत्सु वगैरह भी मैनेज हो जाता है। इट इज सॉर्टेड, आई नो वेयर द मशीन इज, आई नो व्हाट द यूज इज, तो जगह मैनेज हो गई। और एक लाइन में सब कुछ है तो कन्वेयर बेल्ट भी कनेक्ट हो गया, तो मुझे मटेरियल मूव करने में भी टाइम नहीं जाएगा, वर्कर को भी मूव करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पे है। So that is your cellular manufacturing. So movement is taken care of. Wide variety of similar products can be produced. मैंने बताया ना आपको, एक इक्विपमेंट अगर कॉमन इक्विपमेंट है तो इट कैन बी यूज्ड फॉर 2-3 डिफरेंट सेल्स। एक इक्विपमेंट अगर कॉमन इक्विपमेंट है तो इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। जैसे सीजर अगर है तो सीजर से शर्ट भी कट हो सकता है, ट्राउजर भी कट हो सकता है, कुर्ता भी कट हो सकता है। तुम लोग के ऑफिस में स्टेपलर होता है, उससे ऑडिट रिपोर्ट भी स्टेपल कर सकते हो, और उससे नॉर्मल पीएनएल बैलेंस शीट भी स्टेपल कर सकते हो, उससे इनकम टैक्स रिटर्न भी स्टेपल कर सकते हो, या स्टडी मटेरियल का नोट्स अगर ऑफिस के प्रिंटर पे छाप दिया तो वो भी स्टेपल कर सकते हो। कौन रोकेगा तुम लोग को? बट एक ही वन स्टेपलर इज गेटिंग यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वन मशीन कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो सारे मशीन कनेक्टेड होने से एक सिस्टम रेडी होती है, टाइम बचता है, मूवमेंट बचता है, एंड कम से कम लेबर के साथ ये काम एग्जीक्यूट कर सकते हो। यू डोंट नीड मोर पीपल टू टू कैरी ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो ये जरा पढ़ लो यहां से यहां तक, क्विक। देखो यू शेप डिजाइन भी मैंने करके दिखाया था आपको, रीड इट। पढ़ना जरूरी है, तुम लोग का एक रिवीजन में इधर ही करवा लूंगा।
Yes, good count means your total production minus rejections. No, actual quantity is the quantity that is produced. Accepted quantity is good count. Accepted quantity is good count. Flexibility in operation कैसे होगा? एक बार explain करो. अरे अजय, मैंने कहा ना, your one equipment, if it is a common for 3 cells, there is a flexibility, no? एक ही मशीन है, कभी भी यूज कर सकते हो. You need not go to the machine and all because your other machines are also connected to the same thing. Doesn't that give you a flexibility? अगर आपका प्रिंटर आपके पास है, आप ही के पास है, so it gives you more comfort, right? लेकिन किसी और तीन फ्लोर उतर के अगर प्रिंटिंग करना है तो इट इज troublesome. So when your required machine or required equipment is part of your own process, or if it is a part of your own cell, it is a flexibility for you. Got it? Encourage communication. Third paragraph. Okay, see, look at this cell. I have this one cell, I have another cell which is handled by other people. अब तुम लोग एग्जांपल लो, तुम लोग ने प्रिंटर का कमांड, प्रिंट का कमांड दिया है और जाके प्रिंटर के बाजू में खड़े रहे, लेकिन तुम लोग क्या ऑलरेडी आगे बंदा खड़ा है, उसने पेपर देखा, उसको समझ में नहीं आया, तो आप बोल सकते हो उसको, अरे ये मेरा है. That's how you communicate. Now, when you are handling 2 different cells, workers of this cell will communicate with others regarding the common machine, common equipment. Since everything is connected, there can be a better communication also. अगर ये बंदा एक ही मशीन के साथ ऑक्यूपाइड रहता तो he would not communicate with other people. Like आपका प्रिंटर आपके डेस्क पे ही है, तो दिन भर प्रिंट आउट करते रहोगे तो कम्युनिकेशन तो किसी के साथ नहीं होगा. But when there is a common printer, when there is a common equipment, which is a part of 2, 3, 4 different cells, automatically you need to communicate with each other. Ki, this is my production, let me take it, or please don't produce anything. My just 3 units are getting produced. Please give me some time. So that enhances the communication between different workers. Sonal, is it done? चलिए. मेरा एक वीडियो है May 21 का आरटीपी का, मैं तुम लोग को कल डिटेल्स दे देता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में. उसमें तुम लोग को मैंने डिटेल में सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लेन किया है. उसके लिए अभी टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं. आई विल सेंड यू द लिंक, वो लिंक आराम से देख लेना. आई विल सेंड यू द टाइमिंग ऑल्सो. वो May 21 का ऐसा कुछ आरटीपी है जो मैंने शूट किया था. आई विल जस्ट गिव यू दैट लिंक, वो एक बार देख लो. तो उस पर तुम लोग को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. चलो आगे बढ़ते हैं. डिफिकल्टीज इन क्रिएटिंग फ्लो. Difficulties in creating flow. Now, flow will always give you a better result. So what stops you from getting flow? Of course, exceptional elements. If things are routine, they will be produced faster. But if new things keep on coming up, naturally each element will be taken care of. Each element will be handled in a different way. So that may take some time. Machine distances, as we discussed, movement from one machine to another, movement of material, movement of worker will also take time. Bottleneck of machines and parts. Bottleneck of machines and parts means you have more task than the available infrastructure. So there is a bottleneck. Bottleneck is this.
right? So basically 4, 5 different lanes are converted into 2 lanes. That is bottleneck. Now, if that is happening, bacha log, that means there is some scarcity. The requirement is more and the supply is less. The demand is more and the supply is less. Then the routing is another problem. Machine location, relocation is another problem. Cell load variation. Now, if you have 5 equipments in one cell and 10 equipments in the other cell, accordingly, a different labor is required. Accordingly, different infrastructure is required to be set. So if you have uneven size cells available, then they have to be dealt in a different manner all the time. Inter and intercellular material transferring. Now, if there is no conveyor belt, then there has to be haulage, internal transportation. Then reconfiguration of cells whenever it is required. Completion time and dynamic part demands. Dynamic part demand means if there is any change, if there is any specific different type of output required to be produced, you can't implement your the normal strategy, or you cannot use your normal material. You have to use something special. So you have to keep on changing the input. So every time if there is a dynamic part introduced, naturally your flow is not the same which otherwise would have been had there been a common material used. मतलब तुम लोग यार सिंपल एग्जांपल है, एक टिपिकल टाइप का शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हो टिपिकल टाइप के क्लॉथ के साथ, तो द सेम क्लॉथ इज कंज्यूम एंड सेम क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स इज प्रोड्यूस्ड. बट सडनली इफ यू वांट टू manufacture 100 shirts of linen, then the normal cloth will not be used. Linen is a special material which is required to be used. That takes time. Suppose after that you are producing again normal cloth, I mean normal shirts. Again, the same normal material will be used. Again, suddenly you're getting an offer of 50 shirts of silk. So silk will be the material. So accordingly, your system has to be changed. No? और system को change करना मतलब you're changing your equipments. So there is an infrastructural issue. So that takes time. That breaks the flow. Now just read benefit and cost. Then I'll go for the next one. ये benefit and cost पढ़ लो. उसमें डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है. Quickly have a glance on it. Then I'm discussing something important.
नॉट नीडेड एक्चुअली, तुम लोग को देखना है तो देख सकते हो कंसेप्ट इनसाइट। ये वैसे भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ही है तुम लोग को, 4 मशीन, 3 मशीन, 5 मशीन का कैलकुलेशन, 2 people हैंडलिंग 5 machines, 1 person हैंडलिंग 3 machines, यही तो था ना यू शेप। सेम चीज हम लोग ने डिस्कस की है। और इसके लिए मैंने तुम लोग को बोला ये सारा, ये रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग algorithm, I have already explained that in a video, so there is no point in wasting time because it is not direct associated with our calculation. So we'll go for next part now. The next concept is about the improvement. The next concept is about how to improve the business, how to start with a better business, how to implement new systems, or how to start business with solid systems where the wastages will be minimized. Now, why are we focusing so much on minimization of wastage? First task is first requirement is customer satisfaction. Correct. My second requirement is improve cycle time and reduce cost. Cycle time means production time per unit. अगर improve होता है तो time कम लगेगा, time कम लगेगा तो सेम टाइम में ज्यादा यूनिट्स बना सकते हो, यार सेम प्रोडक्शन कम टाइम में हो सकता है। नाक नाक खोल के सुनो, सेम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है या सेम प्रोडक्शन कम टाइम में हो सकता है इफ यू रिड्यूस साइकिल टाइम। In both the cases your cost goes down, that means you can have a competitive selling price in the market. इससे ओवरऑल बिजनेस भी इंप्रूव होगा। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट, कैसे कर सकते हो ये? सबसे पहले तो योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन फैक्ट्स। You cannot simply estimate things or plan things and take decision based on that. You should have some concrete data with you before you take the decision, so that you can focus on improvement of management areas as well as production processes. For that you need a proactive management team which can work together with a common goal, and the common goal is reduction in wastages or defects of all kinds. अब इसमें ना दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है दमाइक which is used for existing business. दमाइक is used for existing business. ये देखो, and it leads to significant improvement in the business structure. Now damaik D stands for define the problem, find out what are the goals to be achieved, find out what are the requirements of your customer, because customer satisfying requirements of customer will be your ideal goal. Apart from that, cost reduction can also be your ideal goal, and there can be some obstacles while implementing it, while fulfilling it. So you define those problems. You measure your current scenario, you find out your current performance. So that is measurement. Then analyze the process to determine root causes of variation. The moment you realize there is a variation in the cost, the moment you realize there is a variation in the process, you don't simply stop there. You try to find out reasons for all variances. जैसे standard costing में you guys used to do मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल लिया,
if actual price is more than standard, it was always considered to be adverse variance. And if your standard price was more than actual, then it was considered to be favorable variance. Now, whether it is adverse variance or it is favorable variance, in both the scenarios, we try to find out the reason. Well, it is very clear why we do it when it is adverse variance. नुकसान हो रहा है. फेवरेबल में क्यों करता है? इधर तो तेरा फायदा हुआ है, क्यों उंगली कर रहा है? कैसा है? I can always buy inferior quality of material at a lower price and show favorable price variance. मैं adverse favorable से खुश नहीं हूं. I need to know the root level cause. And if root level cause tells me that that favorable variance is a perpetual variance, now there is a reason for me to be happy. Otherwise, it's a concern for me. क्योंकि अगर इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल अपने सस्ते दाम पे उठाया है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो बहुत फेवरेबल आएगा, लेकिन फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से लेके वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, बैंड बाजा बारात निकलेगी. So it is not something which can be distracted, which can be ignored. So analyze the process, determine the root cause and find out root cause for the variations. Then you implement improvement techniques and control them. That is why it is the mic. Define the problem, measure the process, analyze the process, find out root cause, improve the process by using different techniques, and then control the process. चलो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. You are running a restaurant in town. Okay, you are running a restaurant. तुम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर्विस. तुम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर्विस. कितने भी मेहनत करो, डिले हो ही जाता है तुम लोग को. मेन्यू तुम लोग टाइम पे सर्व कर ही नहीं सकते, कस्टमर करते ही नहीं हो. सो दैट इज योर प्रॉब्लम. फाइंड आउट रीजंस. कितनी बार हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कौन से आइटम के लिए हुआ है, आई मीन कौन से फूड आइटम के लिए हुआ है, फिर कितनी बार हुआ है, एसी में हुआ है, नॉन एसी में हुआ है. ऑल दीज थिंग्स मैटर. नॉन एसी का कस्टमर लूज करना मतलब हाई प्राइस कस्टमर लूज करना. सो इट मैटर्स टू मी. और एसी में बैठने वाले लोग गर्म दिमाग के होते हैं. ज्यादा पैसे देते तो ज्यादा सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं. नथिंग रॉन्ग इन इट, कस्टमर है. बाहर बैठा हुआ इंसान कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता. ऐसे ऐसे 4 उंगली डुबा के पानी का रखो, उधर पानी पी के बैठा रहेगा. लेकिन एसी वाले हाई क्लास बिस्लरी बॉटल में से बिस्लरी पियेंगे वो लोग. सर्विस तो एक्सपेक्ट करेंगे. सो यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, मेजर इट. मेजर करने के बाद एनालाइज करो रूट कॉज क्या है. तो स्टाफ कम है, कुक स्लो है, जो शेफ है आपका वो स्लो हो सकता है. ट्राई टू फिगर आउट व्हाई स्लो. वो बोलता है साला एक कढ़ाई इधर है, दूसरा कढ़ाई उधर है, इधर मारो उधर मारो, इधर टाइम जाता है. मतलब मूवमेंट इज अ मूविंग टाइम इज अ प्रॉब्लम. दैट मीन्स द अरेंजमेंट इज नॉट डन प्रॉपरली. एक तवा एक साइड पे रखा है, डोसे का बैटर कहीं और जगह पे है, तो उधर से मैं लेके आता हूँ, फिर तवे पे डालता हूँ, घुमाता हूँ, कम पड़ गया तो वापस उधर जाके लाना पड़ता है, तब तक इधर का कड़क हो जाता है डोसा. हाँ तो दैट सी यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट रीजंस. और रीजन देखो, एक चीज याद रखना लाइफ में, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के रीजंस भी होते ही है और रीजंस पता चलते हैं. अगर प्रॉब्लम है तो रीजन होंगे, और अगर रीजन होंगे तो रीजन पता भी चलते हैं. फिर इंप्रूव दैट. कैसे? पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा मुझे किचन का. स्किल्ड स्टाफ लेके आना पड़ेगा. बाहर का स्किल्ड स्टाफ में एसी में यूज करूंगा तो एसी से कंप्लेंट कम आएगी. मतलब एसी डिपार्टमेंट, एसी बैंक्वेट जो होता है मेरे पास, वो उसकी कंप्लेंट कम आएगी. अरे आई कैन डू समथिंग नो. चलो खुद का एग्जांपल लो. स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में सबसे बड़ा?
टाइम मैनेजमेंट तुम लोग के लाइफ का आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट। उठते कब हो, सोते कब हो, घर कब पहुंचते हो, नहाते हो, धोते हो, वापस सुबह ऑडिट के लिए चालू। अभी थोड़ा बेटर कंडीशन होगा। याद करो वो दिन, जुलाई के दिन, वो 30 सितंबर के दिन, टैक्स ऑडिट वाले दिन, वो 31 मार्च वाले दिन। हाँ, होता है ना, मतलब हम लोग घर पे आते हैं सिर्फ नहाने के लिए। वो भी ऑफिस में नहीं है इसलिए, उन्हें तो नहीं तो उधर ही रोक रोक लेते हमको ये लोग। यार अबे, अभी तुम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अभी तुम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है लाइफ का? टाइम मैनेजमेंट। डिफाइन द प्रॉब्लम, मेजर द करंट परफॉर्मेंस। सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो, पूरे दिन भर में क्या काम करते हो, ये फाइंड आउट करना जरूरी है। फाइंड आउट कर लो, फिर तुम लोग को पता चलेगा कितना काम कर रहे हो और कितना बाकी है। उसमें भी प्रायोरिटी सेट होंगी कि नहीं, एटलीस्ट 2 घंटा तो मुझे सीए फाइनल का पढ़ना जरूरी है। करेक्ट। देन यू विल एनालाइज द डेविएशन, कि क्यों मैं रोज सोचता हूं मैं पढ़ूंगा रात को और मैं पढ़ नहीं पाता हूं। कौन है वो, कौन नहीं, सॉरी, क्या है वो डिस्ट्रैक्शन मेरे लाइफ में जो मुझे तकलीफ दे रहा है? सी, वेदर इट इज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट इज सर्विस, वेदर इट इज योर पर्सनल लाइफ, द mic is something which can be implemented very successfully and effectively. So एक चीज याद रखना, it is basically for the existing business and it will give you improvement. लेकिन न्यू बिजनेस के लिए दमाइक काम नहीं आएगा, दमादव आएगा। दमादव, दमादव मीन्स, सी दिस, केस स्टडी वगैरह बाद में पढ़ते हैं इसका, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। दमादव इज व्हाट? डिफाइन प्रॉब्लम क्या है, मेजर करो, एनालाइज करो। अब वहां पे इंप्रूवमेंट था क्योंकि यू वर डीलिंग विथ अ बिजनेस विच वॉज इन एग्जिस्टेंस। नाउ यू आर डीलिंग विथ अ बिजनेस विच इज सपोज टू बी ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस। तो कुछ है ही नहीं तो इंप्रूव क्या करोगे? तो डिजाइन ऐसा करो कि चार लोग बोले कि क्या बात है, सारा वेस्टेज रिमूव हो गया। नहीं, डिजाइन वहां पे कैसा था? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, यहां तक तो कॉमन थे हम लोग। उन्होंने वहां पे इंप्रूव किया बिकॉज देवर इन एग्जिस्टेंस। मैं क्या इंप्रूव करूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो आई विल डिजाइन समथिंग विच विल नेवर रिक्वायर इंप्रूवमेंट, एंड देन verify the performance once you start implementing it. So that is why it is Damaik and Damadav. Damaik is for existing. That is why there is improvement and control. Improve the system, control it. Here, design the system and verify the system once you start implementing it. समझे? ये पढ़ लो, ये एप्लीकेशन ऑफ द माइक पढ़ लो क्विकली, और कुछ भी डाउट होगा मुझे पूछ लेना। आई बी देयर फॉर एक्सप्लेनेशन।
Are Khushi, major means you simply get the data and find out to what extent the problem has occurred. See, it is a banking industry, so waiting time for the customer is a concern. No? So find out how many customers or how much is the time wasted, for how long the customers had to wait. That is major. Clear, Khushi? Are Khushi, is this clear? Different processes will definitely have different impact on customer, no? Acha, different process will have different outcome. That means different processes will have different outcome and different processes will have different impact. Different processes. Okay, so account opening will be one process. Cancelling FD will be another process. Handling mutual fund will be another process executed by bank. Passbook printing can be one process. Do you think same time is applicable? No. So every process has a different problem. तो हो सकता है पासबुक प्रिंटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बाहर मशीन रखा कर रहा कचर ले ले निकाल के अपने हिसाब से। डीमैट अकाउंट ओपन करने में ज्यादा टाइम जाता होगा, एफडीज फटाफट क्लियर होते होंगे, लॉकर के लिए वेट करना पड़ता है। सो डिफरेंट प्रोसेस विल हैव डिफरेंट आउटकम एंड दैट इज व्हाई डिफरेंट प्रोसेस विल हैव डिफरेंट इम्पैक्ट। चलो सेकंड केस स्टडी पढ़ो, केस सिनारियो, डर्बी ग्रे। पढ़ लो एक बार क्विकली।
ओके, चलो नाउ सब सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है. दमाइक एंड दमदव कभी भी पूछने दो, you're just supposed to split the question, you're just supposed to split the case study, you're just supposed to split the given question into damaik and damadav, those points. Your work is done. Standard procedure, कोई rocket science नहीं है. It is easy to score. हाइप बना के रखा है लोगों ने केस स्टडी, केस सिनेरियो एंड ऑल दैट. मेरा केस स्टडी, केस सिनेरियो का एक पूरा बुकलेट, दैट इज ऑल्सो ऑन यूट्यूब. मैंने पहले ही शूट करके रखा है स्टेज वाइज. केस स्टडी का एक स्टडी मटेरियल आता था पहले, केस स्टडीज एंड केस सिनारियोस ऑफ आईसीआई. दोनों लिंक में तुम लोग को कल दे दूंगा. ओके, सो let's proceed further. It's about something different. Damaik and Damadav were basically concerned about maintaining. They were basically concerned about maintaining quality. Improvement नहीं था, innovation नहीं था. Are you getting me? There was no improvement. There was no innovation. Innovation के लिए you need to implement different things. And whenever you talk about innovation, innovation can be in various areas like production, distribution, and after sales. When you talk about production, the innovation is required for production processes, the technology that you use, the know-how that you are using, production facilities that you are using. Delivery, if you talk about, then the supply chain, the vehicles that you are using, the technique that you are using, barcoding, branding, everything will be taken into consideration. Support service, if I talk about, after sales services, if I talk about, it's very important how you maintain the asset at customers' premises. If there is a problem, if there is a service issue, how that issue is handled by you, that will also be seen, that will also be evaluated. So one of the most widely recognized automobile companies in the world is American-based multinational manufacturer Ford Motor Company. India से गायब हो गई अलग बात है, but still. Now more than 110 years old, the company was founded by Henry Ford and has succeeded in innovative designs and ideas for more than a century. One of their most notable innovations came from more than 100 years ago with the invention of the world's first moving assembly line. Assembly line मतलब production line. उस पे वो कार का आउटर स्ट्रक्चर सेट होता है, देन कुछ लोग मिलके टायर सेट करते हैं, कुछ लोग इंजन फिट करते हैं, कुछ लोग बाकी चीजें एक्सेसरीज फिट करते हैं, मशीन फिट करते हैं, एंड इन नो टाइम द कार इज मैन्युफैक्चर्ड. So the production time was 12 hours instead of 12 hours. They started completing work in 90 minutes. मतलब 12 घंटे का काम 1.5 घंटे में खत्म. That process innovation, creating an assembly line to speed up production, not only benefited the auto giant, but manufacturers of other consumer goods such as refrigerators and vacuum cleaners. So assembly line का मतलब वो होता है, एक ही सरी के सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो एक ही स्पिंडल पे फिक्स कर दो, 60 5 स्ट्रक्चर सेट कर दिए, सब में टायर लग गए, सब में डोर लग गया, सब में बॉनेट लग गया, सब में इंजन लग गया, सबका वायरिंग हो गया. एट अ टाइम your vehicles are more than one vehicles are getting ready. Now BPR, business process reengineering, is little different. Business process reengineering and process innovation are little different. Process innovation is a change, but business process reengineering, BPR, is a radical change, 360-degree change in the business processes. Business process reengineering was introduced in India for the first time by ICICI. इनके वजह से कोर बैंकिंग कॉन्सेप्ट चालू हुआ.
तुम लोग के जनरेशन को शायद पता नहीं होगा, पर पहले ऐसा था कि अगर तुम लोग का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, बोरीवली वेस्ट स्टेशन रोड ब्रांच, तो आपके सारे ट्रांजैक्शन उसी ब्रांच से होंगे। अब ऐसा नहीं होता। यू माइट बी हैविंग अकाउंट समवेयर एल्स, यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम समवेयर एल्स, यू कैन डिपॉजिट मनी समवेयर एल्स। कोर बैंकिंग that was initiated by ICICI in India in 90s. So basically, business process reengineering amends the existing process and PI attempts to implement new processes into the organization. Business process engineering अपडेट करता है, लेकिन प्रोसेस इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स 360 जो radical change. PI is more into radical than BPR because changing the overall structure, it changes the overall structure of the organization, where BPR streamlines the processes which are already in place. You can say that even we started with online industry, online coaching. Now batches are going online. That is also a business process reengineering. That is not process innovation, because we already had online vertical. That online vertical is getting used for this, for live streaming of lectures. So that is business process reengineering. We have to rearrange things. But if we were new, if we were not into online coaching, and if we would have started with this, then it would have been a radical change. It would have been a process innovation. So that was your lean theory. Now let's एक काम करना, सिर्फ इसका ये केस स्टडी पढ़ लो. I want to solve MCQs as well as some practical question based on it. आज खत्म कर देंगे इस चैप्टर को. पढ़ लो, ये बाइक वाला पढ़ लो.
Chalo. Now, let's go for MCQ part. MCQ number 1. 5S. The Seri Setsu. Suketsu. Fits in which stage of PDCA? PDCA याद है? हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में किया था. P for planning, D for do, C for check, A for action. So you plan things, then implement them. Do. Then check the results. Then check the results. And take action accordingly. So 5S किस में आएगा? Naturally do. 5S you implement to maintain the quality, to eliminate wastage. So it is an implementation stage required for continuous improvement. So it is B. MCQ 2. Which one is not suitable? Which one is not the benefit of shine? Shine means cleanliness. Inventory reduction का क्या connection है उससे? देखो, cleanliness की वजह से less productive downtime, happy employees because of the cleanliness, obviously, improve quality. ये मान सकता हूँ मैं. Inventory valuation का कोई connection ही नहीं है shine से. Shine means cleanliness and all. Which of the following does Kaizen improvement process not focus on? Kaizen, if you recollect, it was a continuous improvement. Again, Kaizen समझते हो? याद है ना? हाँ, तो 5S focuses on improvement. Pokayoke, yoke नहीं actually, वो pokayoke. Pokayoke. Pokayoke means, you can write there, it avoids unexpected surprises in the business. It can also be considered as giving mistake proof. Giving mistake proof environment. Pokayoke. Just in time. Again, that reduces your time. Improvement by innovation. Now, innovation is not needed. Innovation is not done in Kaizen. Kaizen is continuous improvement in the existing structure. There is no innovation. So first three options are possible for Kaizen. Last one is not. Improvement by innovation is not needed. Which of the following is not a tool? Which of the following is not a tool used in defined process? Which is not a tool used in defined process? Defined process. Planning, analysis, and mapping are the three tools which are used to design the system. Check sheet. Now, what is check sheet? See, the check sheet is a structured form of collecting and analyzing data. Boss, you have already done that. That is the second stage. Design is the first stage. Measurement is the second stage where you need check sheet. Check sheet is required when the measurement is going on, when the measuring stage comes. It is not needed for, see, here they go. It is used in measure process. So it is collection and analyzing data. So it is not a part of defined phase. I hope you guys are clear till first four. Fifth one. What will be the overall
equipment effectiveness if second is ideal cycle time. Second, 1 second is ideal cycle time. Plant production time is 7 hours out of, and the total count is 19 to 40, and the good count is 18,848. OEE की बात करोगे तो फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी. अब अवेलेबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब 100% आएगा. इम्पैक्ट एनालिसिस बेटा डिफाइन में आएगा ना खुशी. You want to check what is the impact of something. If the impact is high, you may eliminate the process. If the impact is low, you may implement the process. So impact analysis is a part of design phase only. समझा? अब इधर देखो, OEE मतलब सबसे पहले अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी का कुछ बोला नहीं है. प्लान प्रोडक्शन टाइम इज 7 hours. 7 hours ही दिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो 100% हो. यू नेवर नो, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल. अच्छा, टोटल काउंट कितना है? 19 to 40 यूनिट्स. 19 to 40 यूनिट्स. बना है, लेकिन 18,848. 18,848 एक्सेप्टेबल है. 1 सेकेंड के हिसाब से 18,848 सेकेंड्स लगने चाहिए, डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स. तो स्टैंडर्ड मिनट्स मिल जाएंगे. पूरा डेटा नहीं है, कोई बात नहीं. लुक एट दिस, यू कैन यूज दिस, नो. स्टैंडर्ड टाइम 1 second. 1 second is 1/60 minutes upon total time. टोटल टाइम मतलब 7 घंटा काम किया है, तो 60 मिनट्स होता है 1 घंटे में, तो 420 मिनट्स इंटू अनदर 60 सेकेंड्स, तो 60 मिनट्स 60 seconds. So 1/60 minutes upon 25,200 seconds, या फिर 1 second ले लो. ऊपर भी सब सेकेंड में ले रहे हो तो सेकेंड ले लो. मल्टीप्लाइड बाय एक्सेप्टेड क्वांटिटी 18,848. So 18,848 divided by 25,200. इसका परसेंटेज निकालोगे तो आएगा 74.79, which is third. समझ में आया वो शॉर्टकट कैसे काम आ सकता है तुम लोग को एमसीक्यूज में? अरे गाइस, तुम लोग को समझा why did I spend more time on explaining the derivation of this formula? Standard time required divided by total available time multiplied by standard quantity, actual quantity, net quantity. Then this is MCQ number 6. Which principle or technique is considered as a base platform for TPM? Six Sigma will suggest improvement. Kaizen will also suggest improvement. So, what do you think? What can be the base? What is SMED? It is single minute
exchange of die is made. Single minute exchange of die which reduces time. तो इसमें performance maintenance, if you are talking about performance maintenance, if you are talking about, that means you are talking about the platform on which your performance evaluation starts. Correct? तो platform set करने का मतलब क्या? 5S you implement, so the platform is set, and now you start implementing total production management. समझा? ये SMAD मतलब single minute exchange of die. It reduces time basically. But वो डायरेक्टली इसमें पूछा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. चलो फर्स्ट वन, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. Pearson Metal and Motor Works deals in manufacturing of copper wired electronic motor, which is specifically designed. PM2W is thinking to shift from traditional system to GIT system as part of process innovation. Traditional system का हिसाब देखो. Inspection 40 minutes, storage 80 minutes, moving time 20 minutes. मतलब ये clearly पता चल रहा है 140 जो है वो नॉन वैल्यू एडेड है, 60 जो है वो वैल्यू एडेड है, टोटल 200 मिनट्स घुसा है. JIT अगर यूज किया तो 60 मिनट्स नॉन वैल्यू एडेड, 40 मिनट्स वैल्यू एडेड, 100 मिनट में काम हो जाएगा. Further, the company decided to practice single piece flow under GIT, one product at a time, produce one product, then go for the other one, single piece flow. PM2W received an order which is due to manufacture and delivered for 10 such motors. Total available production time to produce what customer demands is 480 minutes, out of which normal practice is that 30 minutes will be spent on shutdown and cleaning. CEO is also considering JIT purchase apart from JIT production. Explain just in time. वो तो theory है, वो तो हो जाएगा. Now, what do you mean by takt time? Takt time. Last syllabus में भी, when we were discussing only 5 theory subjects, 6 theory subjects and 6 practical subjects, takt time question में दिया नहीं था. takt time पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं था, डायरेक्टली क्वेश्चन में आया. अब takt time का मतलब होता है, takt time का मतलब होता है your time divided by quantity. How much is the time required for one unit is takt time. How much is the takt time required? अच्छा, अभी देखो 480 मिनट्स में से 30 मिनट्स तो पहले से पता है काम नहीं होने वाला, मतलब 450 मिनट्स होंगे. So 450 यूनिट्स और अदर 450 मिनट्स काम चलेगा for 10 such motors. तो 45 minutes per motor is your cost, is your takt. Takt time is production time. So available time divided by total quantity required. You can plan it out in advance. भाई 480 मिनट काम होता है, 480 मिनट में से 30 मिनट काम होने वाला है नहीं, तो आपको पहले से पता है 450 मिनट्स काम होने वाला है. You already know 450 मिनट्स काम होने वाला है. आपको 10 यूनिट बनाने, तो आपको पहले से पता है कि 450 मिनट्स है 10 यूनिट बनाने, मतलब एक यूनिट के लिए मेरे पास है 450 यूनिट्स. जैसे तुम लोग प्लान करते हो एग्जाम के लिए
5 महीने बचे इंटू 30 days, तो 150 days बचे, डिवाइडेड बाय 8 papers, एंड यू कम टू नो के पर पेपर कितना दिन बचा है. दैट इज स्टैक टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट. अब जेआईटी में शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका क्या बोलते हो? जेआईटी में शिफ्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कॉमन सेंस है रे. 100 मिनट में काम हो रहा है. दूसरा, यू सी द साइकिल एफिशिएंसी. बच्चा लोग 200 मिनट में 60 मिनट ही प्रोडक्शन टाइम था. मतलब पहले तुम लोग 30% प्रोडक्शन टाइम कर रहे थे, अभी 100 में से 40 हुआ है, मतलब 40% हो गया है तुम लोग का. नॉन वैल्यू एडेड टाइम अगर डिक्रीज हो रहा है, नॉन वैल्यू एडेड टाइम अगर डिक्रीज हो रहा है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर जेआईटी. इसका सारा सोल्यूशन है पीछे, मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं तो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि उन्होंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है. आपको समझ में आया जेआईटी इंप्लीमेंट क्यों करना चाहिए? पहले मैं बहुत स्लो था, 200 मिनट काम करता था, 200 मिनट में से सिर्फ 60 मिनट्स प्रोडक्शन के लगते थे, तो मेरा 30% टाइम प्रोडक्शन में जाता था, एंड 70% टाइम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में. नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज मतलब एक्टिविटीज विच आर वेयर यू आर नॉट कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. तो ये वो है जिसमें रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है. तुम लोग 200 में से 60 घंटा ही सिर्फ उसमें यूज कर रहे हो. इधर देखो, 100 में से 40 घंटा. बस earlier it was 30 minutes, now it is now it is 40 minutes, 40%. Earlier it was 30%, now it is 40%. So productive time increased, plus your overall time has also gone down. JIT needs to be implemented. समझे? Question number 2. A manufacturer is considering implementing JIT system for some of its raw material purchase. As per the current inventory policy, raw material requires 1 month's production and finished goods equivalent to the level of 1 week's production are kept in stock. This is done to ensure that the company can cater to sudden spurt in the customer's demand. अचानक से डिमांड बढ़ गया तो मेरे पास स्टॉक होना चाहिए, तो मैं स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं. दिस इज डन टू एंश्योर दैट कंपनी कैन कैटर द स्पर्ट इन द डिमांड. हाउएवर, द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी हैज बीन इंक्रीजिंग रिसेंटली, हेंस द कंसिडरेशन टू मूव to more robust just in time manufacturing system that can reduce the inventory carrying cost. Details relevant to raw material inventory are given below. Average inventory of raw material held by the company throughout the year is 1 CR. Average inventory of raw material held by the company throughout the year is 1 CR. So that your working capital is blocked to the extent of 1 CR. Procurement of material is 12 crores. By moving just in time, the stock will be, it will be eliminating the holding of stock naturally. Instead, suppliers of these materials are ready to provide goods as per the introduction. Okay, the JIT explain किया इन लोगों ने. Increase quality check services done by the supplier as well as to compensate them for risk of holding the inventory. The company is willing to pay a higher price to procure raw material. Cost is going to increase by 30%. मतलब बॉस, आज जो आप लोग 12 करोड़ में खरीद रहे हो, आज जो आप लोग 12 करोड़ में खरीद रहे हो, उसके लिए आपको देना पड़ेगा 50%, 30% मोर, 36 15.60 करोड़. जेआईटी इंप्लीमेंट किया तो इन्वेंट्री कॉस्ट बचती है, टाइम टू टाइम मटेरियल इज मेड अवेलेबल, तो इंस्पेक्शन वगैरह पे तो खर्चा आएगा ही ना यार. 15.60 विल बी योर कॉस्ट इफ यू इंप्लीमेंट जेआईटी. आज 12 करोड़ का मटेरियल यूज कर रहे हो लेकिन स्टॉक है, 15.60 का करोगे तो स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Consequently, quality check and material handling cost will also reduce by 1 CR per year. मतलब 1 CR से कम होगी. प्लस देयर विल बी सेविंग ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ 20 lakhs. मतलब बॉस, मैं अगर जेआईटी नहीं करता तो मुझे ये सारा खर्चा उठाना ही है.
अगर जेआईटी करता हूं तो ये बच जाएगा, ये भी बच जाएगा। हाँ, लेकिन 3.60 ज्यादा देना पड़ेगा। यहां तक समझ रहा है बच्चों? जल्दी बोलो बच्चों। चले गए क्या? हाँ। Raw material stored in a warehouse that cost a rent of 3 crores. On changing to JIT, the warehouse space should no longer be required. माँ कसम, पैसे का तो सेविंग पे सेविंग हो रहा है। इधर मैं 3 करोड़ खर्च कर रहा हूं, इधर मैं नहीं कर रहा हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो जेआईटी नहीं होगा तो मेरा ये खर्चा होगा, जेआईटी होगा तो ये खर्चा होगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Production is 1,50,000 per year. The company plans to maintain its finished goods inventory equivalent to 1 week production. Despite of this, in order to have a complete cost benefit analysis, the management is also factoring the possibility of production stoppages due to the unavailability of raw material from the suppliers. This could happen due to delay in delivering and non-conformance of the cost. Labor works for 8 hours. There is no material to work on. Due to the stoppage in production of the above reason, it is possible to have a stock out of 3,000 units in a year. फिलहाल 3,000 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है। स्टॉक आउट रिप्रेजेंट लॉस्ट सेल्स अपॉर्चुनिटी ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फिनिश गुड्स। आपको पता है ना आउट ऑफ स्टॉक होने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इफ यू आर आउट ऑफ स्टॉक, योर प्रोडक्शन गेट स्टॉप्ड. If you're out of stock, your production gets stopped. The quantity which you would have produced is not getting produced. That means the quantity which you would have sold is not getting sold. That means the quantity which you would have generated some profit, it is not generating any profit. So there is a loss of profit. तो ये बोलता है कि 3,000 यूनिट्स का लॉस होगा। 3,000 यूनिट्स अगर ये सब नहीं होते प्रॉब्लम्स, तो 3,000 यूनिट्स में ज्यादा बनाता, ज्यादा बेचता, 3,000 यूनिट्स का प्रॉफिट भी मैं ज्यादा कमाता, विच इज सैक्रिफाइस्ड. If you are out of stock, this is stock out cost for you. Loss of profit, loss of market share. 3,000 यूनिट्स अब मार्केट में कम जाएंगे तो मार्केट शेयर गोज डाउन, और आपका ना होना किसी और के लिए बेनिफिट हो सकता है। बेस्ट फ्रेंड नहीं रे, कॉम्पिटिटर। आपका ना होना कॉम्पिटिटर के लिए बेनिफिट हो सकता है, तो इन दैट केस यू मे लूज योर कस्टमर परमानेंटली. लर्न टू बी देयर. योर एब्सेंस इज समवन एल्सेस बेनिफिट. इंडस्ट्री में भी यही होता है, याद रखना. सो यू हैव टू बी देयर. क्वेश्चन कहता है स्टॉक आउट कॉस्ट इज रिलेटेड टू 3,000 यूनिट्स. मतलब इन शॉर्ट, अगर 3,000 यूनिट्स का शॉर्टेज आता है तो 3,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन अब मैं नहीं कमा पाऊंगा. 3,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन अब मैं नहीं कमा पाऊंगा. सिंपल है. क्वेश्चन क्या बोलता है लेकिन आगे जाके, therefore in order to reduce this opportunity cost and to make up for the lost, the labor can work overtime that would cost company 10 lakh rupees per annum. अरे देवा रे देवा, मतलब मुझे यहाँ पे अगर जेआईटी वगैरह इंप्लीमेंट करना हो तो ये रिस्क आउट ऑफ स्टॉक होने. जेआईटी मतलब जस्ट इन टाइम, नो इन्वेंट्री. नो इन्वेंट्री, दैट मींस यू आर एक्सपोज टू स्टॉक आउट रिस्क. तो आपने स्टॉक आउट रिस्क कम करने के लिए 10 लाख रुपए और खर्चा किया है टू रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बराबर. This is a maximum capacity of the, in terms of hours that the labor can work. With this overtime, stock out can reduce to 2,000 units. यार मतलब मेरा लॉस कितना होगा? मेरा लॉस 2,000 का होगा. क्वेश्चन बोलता है कि सेलिंग प्राइस इज 5,000. क्वेश्चन बोलता है सेलिंग प्राइस इज 5,000. वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 2,000. वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इज 750. मेरी बात ध्यान से सुनना. 5,000 सेलिंग प्राइस है ना प्रोडक्ट की. 2,000 and 750. वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 2,750. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब
2250 हो गया आपका कंट्रीब्यूशन फिलहाल। लेकिन बच्चा लोग, क्वेश्चन बोलता है कि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज करेंटली 800 पर यूनिट विच विल इंक्रीज बाय 30%। बाबू, योर, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, पे अटेंशन। योर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 2000 इंक्लूड्स मटेरियल कॉस्ट, एम आई राइट? योर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट विल इंक्लूड मटेरियल कॉस्ट ऑफ 800, एम आई राइट? अब अगर 800 30% बढ़ेगा, यानी कि 240 से बढ़ेगा, तो इसी का मतलब यह होता है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी अब 250 से बढ़ेगी। अगर वेरिएबल कॉस्ट 240 से वेरिएबल कॉस्ट अगर 240 से बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट अगर 240 से बढ़ेगी, तो मेरा कंट्रीब्यूशन बाबू लोग 240 से कम हो जाएगा। यू गाइस अग्री विथ मी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 2000, जिसमें 800 का मटेरियल है, और मटेरियल अगर 800 का 1040 होगा, मटेरियल अगर 30% बढ़ेगा तो 240 से मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो 240 से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट विल गो अप। इफ your variable cost goes up by 240, there is no other change in variable cost, that means basically your contribution is going to get decreased by 240. so 2250 का contribution आ जाएगा 2010 पे, और ऐसे 2000 यूनिट्स का लॉस होने वाला है बाबू। हे बच्चा लोग, 2010, देख क्या है, 2010 इंटू 2000, तो यार इसका मतलब मुझे 40,20,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है अगर मैं जेआईटी गया तो। If I go for JIT, there will be no inventory. If there is no inventory, there is a risk of I being out of stock by 3,000. लेकिन 3,000 से आउट ऑफ स्टॉक ना होने के लिए मैंने 10 लाख रुपया खर्चा किया। ओ माय गॉड, दैट मींस 2 लाख से तो 2,000 से तो आउट ऑफ स्टॉक होऊंगा मैं। 2,000 यूनिट्स खोने का नुकसान, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 2,000 यूनिट्स बनाता तो 2010 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कमा पाता। अब 2,000 यूनिट्स नहीं बनेंगे तो 2010 का नहीं मिलेगा। पहले बनाता था, अब नहीं बनेगा। तो पहले कमाता था, अब नहीं कमाऊंगा। तो इससे 1,000 का लॉस तो अवॉइड कर दिया, लेकिन 2,000 का लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन बाबू झेलना पड़ेगा मेरे को। 40,20,000। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर विथ व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। On an average, long term return on investment is 15%। अच्छा, एक मिनट, इसका मतलब अभी 12 नहीं 13, 3 16, 16.20 crores एग्जिस्टिंग कॉस्ट है। 15 70 16 20। ओके, जेआईटी का कॉस्ट 16 crores 10,20,000। जेआईटी का कॉस्ट 16 crores 10,20,000। और जेआईटी इंट्रोड्यूस ना करने की कॉस्ट 16 लाख। तो बॉस 9,80,000 का फायदा दिख रहा है मेरे को। क्या बोलते पब्लिक? 9,80,000 का बेनिफिट दिख रहा है जेआईटी का। एक और चीज है, ये 9,80,000 जो सेव करोगे ना बच्चा लोग, इस पे वो 15% इंटरेस्ट भी मिलेगा तुमको। तो दैट इज 1,47,000। और एक बात बताओ क्या, तुम लोग के इन्वेंट्री में 1 करोड़ घुसा हुआ था, अब वो 1 करोड़ इन्वेंट्री में नहीं घुसेगा, तो उस वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो 15% पे, तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। 9,80,000 तो एडिशनल कॉस्ट सेविंग है मेरा, प्लस 1,47,000 इन्वेस्टमेंट से आएगा।
क्योंकि 9,80,000 अगर मैं खर्च नहीं कर रहा हूं तो इन्वेस्ट हो जाएगा, 15% उससे आएगा। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और प्लस आपका 15 लाख, जो 1 करोड़ आप ठूसने वाले थे ना उधर स्टॉक में, अब वो स्टॉक की जरूरत ही नहीं है, तो 1 करोड़ आपके पास ही है। 1 करोड़ का स्टॉक था, अब 1 करोड़ का स्टॉक नहीं है, तो 1 करोड़ मेरे पास है। तो 1 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा तो उधर भी 15% आएगा। ऐसा करके कुछ 9,80,000 प्लस 147 प्लस 15, ऐसा कुछ 26,27,000 का फायदा तो दिख रहा है मुझे JIT का। ले लिया ना भाई वेयर हाउस, तुषार। दैट इज एनुअल कॉस्ट, दैट इज एक्सपेंडिचर, दैट इज रेंट। मैं सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंटरेस्ट ले रहा हूं, ऑपरेशन तो लिया ही नहीं मैंने अभी तक। वो 9.80 में कवर हो गया ना बेटा। इधर आएगा इधर नहीं आएगा तो नेट इफेक्ट क्या है? वो तो 9.80 पे हो गया ना बेटा कवर तेरा। ये सब बचेगा। तो मैंने वही किया ना, 9.80 बच रहा है, तो 9.80 का ले लिया हमने इंटरेस्ट, 15%, 147। तो 9.80 का आउटफ्लो लॉस्ट इज अ बेनिफिट, उसका 15% इज इनफ्लो, प्लस वो 1 करोड़ का स्टॉक। अब स्टॉक नहीं चाहिए तो 1 करोड़ मेरे पास पड़ा रहेगा, 1 करोड़ इन्वेस्ट करके 15 लाख कमाऊंगा मैं। आई होप दिस इज क्लियर। बोलते ही नहीं है यार। कुछ तो रिएक्ट करो माथुर साहब, कुछ तो रिएक्ट करो। गुड। बस इसका सोल्यूशन देख लेना, बाकी कुछ इसमें है नहीं। बाकी कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। यू कैन गो थ्रू दिस, प्लीज डू पॉइंट नंबर 5 एज अ होमवर्क। एकदम सिंपल है, डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। ओके कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, वो ओई निकालने का कैलकुलेशन है। अरे मंगड़ू लोग, इज दिस क्लियर? अरे यस और नो? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो तुम लोगों को समझ में आएगा। इट इज OEE एंड वी हैव स्पेंट इनफ टाइम ऑन OEE। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेना, आराम से मैनेज कर पाओगे। अच्छा थर्ड भी है। अच्छा एक काम करो, तो चलो ठीक है, एक काम करो, होमवर्क में अभी टाइम वेस्ट मत करो, चलो ठीक है, यू फोकस ऑन योर अदर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले ये 3 करवाऊंगा सम, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। इज दिस फाइन नाउ? So I'll be solving 3, 4, 5 tomorrow, and then we'll go for the next chapter. Okay? चलिए, bye bye. Take care. Good night. Have a nice time.